Hello friends, I am Manoj K Jha and we'll talk about answer writing mentorship. See, of all the stages of this examination, preliminary, mains, interview, main examination demands a lot of time, much time, because the ask of this you can say main examination is basically to go deep inside in the subjects, topic, etc. Preliminary is equally difficult, but the additional thing which makes main examination difficult is expression, is output. Expression skill is the output, and so some additional task you have to you can say, or additional skill rather, you have to acquire for that matter. And whatever I'm saying, it's not new, but the question is here: how do we see it? How do we do it? How do we measure it? And how we make our entire preparation more outcome oriented, If you look at, you can say, the ask of the main examination, it's better to start understanding through the cutoff. Right? If you look at the cutoff, two things are there. Two things you can infer out of it. Number one, that almost you will find more than 90% of the students fall anything from 35% to 40% marks in main examination. ज़्यादातर के जब भी रिजल्ट आएगा, और बहुत लोगों के तो मार्क्स ऑलरेडी सोशल मीडिया में है ही, पब्लिक डोमेन में है. इफ़ यू कंपेयर यू विल फाइंड most of them. Fine. Number one. Number two, you will see that if you carefully scan the toppers, or you can say within 100, everyone, or 200, you will find the real fight is of every single marks. Real fight is, you can say, in almost every question. It's not about optional or requisite. Optional ethics may give you the edge, but for selection, you have to perform in each and every question. So, a cutoff tells a lot of big stories about the internal ask of the main examination. I don't know whether you have seriously compared all the things or not, but then if you do it, you will learn a lot about where is the real competition. Real competition starts with the question itself. In the main examination, it's very easy to talk about the template. Many students used to talk about the template, that this is what you can say the good answer is. Often I get occasion to meet them, and then what I have realized and learned, that most of the students have their fixed template. Express it, that's it, nothing else. Question chahe kaisa bhi ho, chipka do. It will not work. It is not working. It's not working because every question is different, every question's ask is different. And that's why expression skill in the main examination takes a lot of time. It's not only about daily answer writing. No. It's basically about acquiring, developing, evolving certain set of skills that ensures better outcome. सिर्फ एक क्वेश्चन को लिखने से कोई मतलब नहीं है. सिर्फ अगर लिखना ही सही हो जाए तब तो सब लिख ही रहे हैं, लेकिन वो लिख क्या रहे हैं? वो टेम्पलेट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. टेम्पलेट वर्क करेगा नहीं. Template will never ever work in this examination, and this is what this, you can say, the mentorship program is all about, where we cover everything through answer writing, through question, through mentorship of the main examination. But anyway, so if you look at the questions, you will find here that every question's demand is different. And in the main examination, everything is designed in and around your opinion, perspective, etc. Or interestingly, if UPSC allows open book examination, I guarantee that most of the candidates may not be in a position to complete the paper. अगर open book कर देना, आप लोगों को किताब ले जाओ, किताब देख के लिखो, कोई नहीं लिख पाएगा. Complete ही नहीं कर पाएगा. The reason is they never ever ask from you can say any book, number one. And number two, also it's very important to understand that it's basically about opinion.
तो ओपिनियन आपको, आपकी जो अपनी ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, वो किताब में थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन हर क्वेश्चन का डिमांड ही वही है, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन है, एटसेट्रा। Now, why I'm asking or talking all these things? Because if you are not very clear about the goal, if you are not very clear about the milestone that you have to achieve it, the question is, if you are practicing for what? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं? अचीव क्या करना चाहते हैं? आप मेंटरशिप प्रोग्राम में चाहते क्या हो? आप मेंटर से क्या चाहते हो? That's why it's very important for you people to visualize all these things कि हमको ये स्किल सेट्स और ऐसे, और उसका एक रोड मैप डेवलप होना चाहिए, and that you can understand, and that milestone you can set by simply going through the previous question paper. Don't try to solve it, just go through it, flip it. आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो उसको, बहुत क्लियरिटी आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में. You will understand the syllabus better. Though in this program we are helping you to understand the things better, but then you can do it by just going through it. Fine. Now, instead of, you can say, test series or XYZ, I always prefer to use the word assessment. Whatever you are doing, you assess yourself, and then you assess yourself in two ways. Fine. Number one, that how far you are from the goal. आप माइलस्टोन जो करना, अचीव करना चाह रहे हैं, वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? नंबर वन. नंबर टू, वेयर इज द स्पेसिफिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड? वो स्पेसिफिक एफर्ट कहाँ डालना है? बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर एनी वन दीज डेज टू टॉक अबाउट द यूपीएससी प्रिपरेशन XYZ. किसी के लिए भी बड़ा आसान है बोलना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो that where exactly you have to intervene. If you are putting your effort for what you want to achieve out of it. आंसर लिखना है, क्यों लिखना है साहब, क्या लिखना है? आंसर बहुत, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरह के, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत तरह के क्वेश्चंस है. लेकिन अगर ये नहीं पता हो कि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली इंटरवीन करना है, या असेसमेंट की जरूरत है, या मेंटरशिप की जरूरत है, तो यू कैन नॉट डू इट. And that's why when we design any of the course, two things are we have, you can say, it's almost a default template of GSS score. Number one, to map the syllabus very well. In this program also, in the main examination, you will map each and every topic. हर टॉपिक को पढ़ते चले जाओ, उसके कॉन्सेप्ट क्लास देखते चले जाओ, और उस पर असेसमेंट करते चले जाओ, टेस्ट देते चले जाओ. क्योंकि सिर्फ रैंडम कुछ टेस्ट या कुछ कॉपी कुछ क्वेश्चन देने का कोई सेंस नहीं है. वो एक रोड मैप की तरह हो, वो एक जर्नी हो जिसमें आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कुछ स्किल सेट भी डेवलप कर रहे हैं और सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द असेसमेंट. ये असेसमेंट में ये दोनों मुझे समझ में आना चाहिए कि साहब ये दोनों काम मेरे साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, यू कैन से, you need to understand one thing, that main examination is all about one and only one thing, and that is called expression. Expression is output, that's it, simple. Main examination means expression, clarity of expression is the key. तुम लोग जितने भी टॉपर की कॉपी XYZ जितना देखना है देखते रहो, 1000 स्टूडेंट है, 1000 तरीके एक्सप्रेस करने के. जो कॉमन ग्राउंड है या कॉमन आस्क है, या आप ये कह सकते हैं कि जहां से आप एज ले सकते हैं, दैट इज वन एंड ओनली वन थिंग, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. एंड व्हेन आई से क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाई आई एम सेइंग दिस आंसर राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, बिकॉज एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट आंसर राइटिंग, इट्स बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप किसी भी टॉपिक को कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं. नंबर टू, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन प्लस लैंग्वेज. आप लैंग्वेज पे कितना काम कर रहे हैं और लैंग्वेज कितनी इफेक्टिव है आपकी. अगर लैंग्वेज अगर इफेक्टिव होगा तो जो बात आप शायद 50 वर्ड्स कंज्यूम करके कह रहे हैं वो 25 में भी कह सकते हो. दैट्स व्हाई लैंग्वेज डज नॉट मीन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. मीन्स योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस with clarity, with compactness. So this is what the expression is, and main examination is. This is a very slow process.
एंड दैट्स वाई मेन्स प्रिपरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन टेक्स टाइम. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ये कभी भी आप कुछ टेस्ट लिख के या पीटी के बाद आप नहीं कर सकते, आप चाहे जितना भी एफर्ट लगा लो. मैं तो देखता हूँ स्टूडेंट से बात करता हूँ, एनीवे स्पेशली अपना पीटी मैंने देखा है, दे यूज टू रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हियर देयर, कहीं भाग रहे हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है. इम्प्रूवमेंट हो भी नहीं सकता इसलिए क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. 3 months में आपको पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल अपडेशन, सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू, एंड देयर इज ऑलवेज limitation of this, because of the pressure, because of the paucity of the time, because of the planning. कुछ चीज़ें स्लो है बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन स्किल बाय नेचर इट्स स्लो. ये टाइम लेगा ही लेगा इवॉल्व होने में. इसलिए आंसर राइटिंग जब कोई कहता है कि सिर्फ कुछ आंसर लिख लिया, उससे नहीं होगा, एक्सप्रेशन स्किल नहीं आएगा. कुछ आंसर आप लिख सकते हैं साहब, कुछ टॉपिक भी लिख सकते हैं, कुछ टेस्ट भी दे सकते हैं, बट देन व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, let's understand through you can say a completely you can say through a staircase. In the sense, suppose we were talking about the expression is the output, but this output will come through a journey. But you have to allow your complete answer writing preparation XYZ to evolve. It will evolve slowly. It will evolve. It starts with the concept. It starts with the clarity of understanding. If you are lacking here, then whatever you do, it will reflect here. And that's why when we are doing Q&A program, we ensure students to go through almost, you can say, more than 200 hours class also. Concept class बहुत चल रही है, so that एक conceptual clarity भी हो. अगर कहीं doubt है, तो doubt पे भी हम काम कर रहे हैं. Fine. Then comes thought process. Thought process in the sense, how do you reflect? How do you think around it? Fine. उसमें कितनी clarity आपकी आ रही है? उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है? दैट स्टार्ट्स विद आस्किंग क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो सीधा तो आएगा नहीं. तो मेंस के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस दो चीज़ों के आसपास बहुत, आपका आंसर जो है वो इस दो चीज़ से ही बनती है. कॉन्सेप्ट, उसके बाद थॉट प्रोसेस एंड पर्सपेक्टिव. आई ऑलवेज से पर्सपेक्टिव सिंपली मीन्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, that information is not yours. Information is yours as mine, everyone. What is yours perspective? आप उसको देखते कैसे हैं उस इंफॉर्मेशन को? इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, क्या करना है उसका? इसीलिए देखोगे जो मैंने कहा कट ऑफ, कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो 35 to 40% पे स्टक कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक टेम्पलेट और इन्फॉर्मेशन के इन एंड अराउंड ही उनकी प्रिपरेशन है. तो उनके पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिससे वो एज ले पाए. इसलिए आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Sit some time, reflect upon your preparation, and then comes retention. Retention is everything. Means the way everything is organized, is structured. क्योंकि रिटेंशन नहीं होगा तो एक्सप्रेशन कभी आ ही नहीं सकती. तो हम लोग क्या करते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं रादर, कि वो सिर्फ लिख रहे हैं. आपको ये रिलेशन समझना पड़ेगा साहब, तभी जाके आप एक आंसर राइटिंग से या आप एक्सप्रेशन स्किल रादर, आप, आई विल प्रेफर टू यूज द वर्ड, आप एक्वायर कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन right from concept to a thought process to perspective to retention to expression. Fine. And solution, what we are trying to, you can say, do here is basically we are trying to keep ourselves in and around three things. You understand the syllabus very well, topic very well. This is what we are doing. कि आप उसको समझें, और रेदर हम कहें कि पूरा ये आंसर राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो इस तीन एलिमेंट के आसपास मूव करती है. क्योंकि मेंटरशिप है तो मेंटरशिप किस बारे में है साहब? मेंटरशिप सिर्फ बात करने के लिए तो नहीं हो सकती ना. अगर किसी आउटकम नहीं है किसी मेंटरशिप का तो क्या करना है उस मेंटरशिप का? फाइन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. सो देयर आर एम्पल क्लासेस. देन थिंकिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ you can say exercises we have designed.
And from here onwards, mentor's active role involved. And then comes the whole schedule of answer writing or the test, you can say, to acquire the expression skill. क्योंकि जब हम expression skill की बात करते हैं तो सिर्फ वो कुछ टेस्ट लिखने से नहीं हो पाएगा. It's a journey, it's a process. You have to adopt a method, and this is what it is. You can say Mains Q&A program is all about. So this is all about, and this is what we are doing. Practice to understand the milestone that you have to achieve, and we are ready to hold your hand to do so. Thank you.